गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। मार्केट ऑन एक्सपेक्टेड लाइन रहा था जो कि हम देख रहे थे राइट फ्रॉम द प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू टिल द डायरेक्शन विच इज द ट्रेंड पार्ट ऑफ इट काफी सबड्यूड था एंड द गैप विच वी वर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो डाउन बिलो हैज बीन फिल्ड. So quite a predictable market, a boring market. As we said, as a trader, you'll have to live with such market for at least till we don't spot reversals. So let me share my screen and let me read out the disclaimer. Yeah. So I guess I'll have to look on the left to see the window. Yeah, Dheeraj. So before we start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. Please do your own research or consult a qualified advisor before making any investment or trading decisions. So that's the disclaimer. I'm also playing it on my mobile, so I don't have to look on the right for the screen. Yeah, Dheeraj, it's boring. It's going to be boring as we have discussed for the last few days. ऐसे मार्केट के साथ आपको जीना पड़ेगा धीरज. Always you don't find momentum. So don't get disheartened by such markets because as a trader, we have to live with such markets. There is no way you can avoid it. So yeah. So I'll just let's open the price chart of Nifty. See, there is no change, but अभी हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, which means that this flag is approaching. देखिए दो levels थे market के, right? There were two levels. Which were those two levels? Gaps. हमने previously भी देखा है कि market का जो short term reactions है ना, वो gap भरने आता है, and there it pauses. This was the first instance. Again आप देखो वापस ये गैप तक आया and market pause. So let's follow this in context of what we are seeing and observing, which means that can market देखिए गैप पूरा भर गया था दोनों समय. अभी यहाँ पे ये गैप तो मार्केट ने भर दिया, but the candle is not a sign of reversals. So is it going to come and fill this gap? Time will say. Do you all agree, friends? Everything remaining constant, we have to follow it. There is no way out. Let me see whether you are saying yes or no. Yeah, I'll wait for your yes or a no. Yes. Now, see, as we always say, to go right, look left with the risk management in place. When this gap was filled, was there any more confluence था क्या वहाँ पे? तो फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस जो हम एज अ ट्रेडर देखना चाहते हैं वो है बोलिंगर बैंड्स ओवरसोल्ड. देखिए ये ओके, लेट मी सी. आई लाइक माय चार्ट्स टू बी क्लीन. अननेसली शेड वगैरह मुझे एकदम पसंद नहीं है. सो लेट मी मेक इट क्लीन. सो आई विल गिव इट ब्लू कलर. थोड़ा टाइम स्पेंड होगा सेशन में, बट या दैट्स इट. नाउ जस्ट सी ओवर हियर फ्रेंड्स, जब ये गैप भरा over here we had a lower Bollinger Band. Kindly give me yes or a no if you are following it. ये एक probability है of a turn. Only Dheeraj says yes. What about all the other participants? Only 2 likes, friends. Second time, when this gap got filled, you had the lower Bollinger Band. Hi, Shweta. Now again, market is coming to this gap and you have a lower Bollinger Band. So don't you think at this point, we should look for signs of candle reversal first? क्या मार्केट यहाँ तक आके रिवर्स करेगा? देखिए जब तक हमें कोई साइन में नहीं मिल रही रिवर्सल की, वी कांट प्रीएम्प्ट के पहले से कहीं आ सकता मार्केट्स. So whatever we are discussing is for educational and informational purposes only. So that's the probability part of it, right? So that's how markets are very well aligned studies के साथ, right? ऐसा मार्केट देखिए, either we wait for the lower band or let it go above the middle band, either of the two. और यहां से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो. नाउ
सो आइदर इट ब्रेक्स दिस और लेट इट कम डाउन टिल ईयर, बीच में आई डोंट थिंक कुछ भी सोचने की गुंजाइश है, which means I don't think there is anything more we can fit in this price charts. And these candles देखिए are very narrow bodied, which means that relentless selling नहीं है, ये एक ड्रिफ्ट है, ये एक परेशानी वाला ड्रिफ्ट है कि आपको रोज लग रहा है आज मार्केट कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ मार्केट इज। पूरे दिन आप बैठे रहे और वही 100-150 पॉइंट में घूमा। So such boring markets do come at times, and as a trader, you just plan it out. ये बोरिंग कब तक रहेगा? ये बोरिंग तब तक रहेगा जब तक लोअर बैंड 23,780 की तरफ नहीं जा रहा, या तो लेट्स से बीच में कहीं रिवर्सल आ जा रहा है 24,328 के ऊपर जा रहा, विच इज द मिडिल बोलिंगर बैंड। ये तो बैंड के साथ कॉन्फ्लुएंस स्टडीज हो गई। नाउ लेट मी रिमूव दिस। नाउ अनदर थिंग, इफ यू सी, अगर मैं यहां से यहाँ चैनल ले रहा हूं तो समवेयर डाउन द लाइन, सॉरी, ये चैनल लो भी वहां पे आ रहा है। नाउ यू आर सीइंग इट एवरीबॉडी। सो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमको लगता है भाई अभी हो गया ना ये ना ना, वी गिव अप एंड स्टफ लाइक दैट्स वेयर प्राइस बिकम्स एक्साइटिंग। राइट नाउ इट्स बोरिंग। सो हियर यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्या है? नंबर वन, गैप। Number two, lower Bollinger Band. Number three, channel low. Everybody clear? Do you all agree the conference part of it? If you don't agree, it's absolutely fine. बोल दो I don't agree. Because जो भी हम कर रहे हैं, it's for educational and informational purposes only. सो या इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है मार्केट में फ्रेंड्स। ये कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट है। देखिए एज अ ट्रेडर आपको कॉन्फ्लुएंस खोजना है, जब मिलता है then you have to be aware of it. Confluence are very very powerful technical tools, which means that more than one study coming at a same price points. So that's nifty, well defined in a upward sloping channel. Right now it's a corrective. Another thing I want to explain, since देखिए it's when something is happening, let me tell about this. Remember one thing. See, market has taken out this high. यहाँ से करते ज़्यादा दूर नहीं जाते. So when market takes out the high, ये higher highs हो जाते. So what happens? Market then holds above the last low. Again, market has taken out this high. So let's assume it will hold above this low. Does this sound logical, everybody? For a short-term bounce, let's say not a big reversal, but higher lows, higher highs. If you agree, say yes. If you don't agree, it's fine. We are just trying to probe the price action. Yes. So एक बार higher high बन जाता है ना, then it says that something has happened in context of trend. So yes, I'll just stop at this point, which is this entire gap. क्या पूरा गैप भरेगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, एंड इट्स विथ आवर लॉजिक ओनली वी आर स्टॉपिंग हियर। और आपने अगर वीकली सबस्टैक, वेंकट सेज वेरी नाइस, oh thank you Venkat. Venkat always says good things about me, Venkat. Yeah, we are not getting likes. Traders are not liking the sessions. We are putting in all the efforts collectively, all the trading titans out there. So that's the market for us today. एंड ऑल द सेक्टर इंडेक्स जो हमने देखा था, देखिए वीकली नोट संडे को जो रिलीज होता, हमने मंडे को एनालाइज किया था कि सारे सेक्टर्स में साइडवेज टू रेंज बाउंड है। ऐसे में इंडेक्स कहां से आपका मूव करेगा? डू यू ऑल रिमेंबर द वीकली सब्सट्रैक्ट नोट? So it becomes tough at times for the market. Still it doesn't come to the levels which is known to everyone. देखिए लास्ट लो में इसमें कुछ मैंने खोज के नहीं निकाला, कोई भी चार्ट देखेगा पता चल जाएगा लास्ट स्विंग लो है और गैप है। अगर कोई भी लेवल सबको दिख रहा है देन क्या होता है, कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, सब वहां के लिए वेट करते हैं। लेट्स सी वेदर इज कमिंग और नॉट। आफ्टर दिस लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी।
नाउ दिस इज बैंक निफ्टी. देखते हैं आज क्या क्लोजिंग में टिका है क्या बैंक निफ्टी में. हाँ, ये नया क्लोजिंग वाला ही लफड़ा है. आई थिंक यहाँ पे बंद हुआ था, 100 पॉइंट ऊपर क्या टेल क्रिएट कर दिया. विल हैव टू लिव विद दिस. मैं ज्यादा माइक्रो नहीं करूंगा. इफ समथिंग हैज बीन डिसाइडेड, लेट्स फॉलो इट. नाउ देयर आर 5 legs. सो बैंक निफ्टी जो है वो भी ड्रिफ्ट में ही है, बट बैंक निफ्टी अभी भी एक नैरो चैनल में. और देखिए बैंक निफ्टी में अगेन आई रिपीट, 200 दिन का एवरेज डाल के रखो. समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, कोई एक सेक्टर इंडेक्स जिसमें निफ्टी का हैवी, निफ्टी का वेट, निफ्टी में उसका वेटेज बहुत हाई है, अगर वो साइलेंटली कोई लेवल्स निकाल डालता है तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट. एंड दिस इज द 200 डे मूविंग एवरेज. गॉट इट. सिंपल. सो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इट्स जस्ट विपसॉइंग द एवरेज. और विपसॉइंग द एवरेज में क्या आपको साइकिल लेंथ भी मिल जाती है. साइकिल लेंथ देखिए, सुनने में बड़ी बड़ी चीजें लगती है, सच स्मॉल थिंग्स. साइकिल लेंथ का मतलब क्या है? प्राइस साइकिल लेंथ मेजर द highs and the lows from a particular price point. Here particular price point is the 200 day. ऊपर साइकिल कितनी गई? 2.88%. नीचे जब तो यहाँ पे एक छोटी साइकिल कितनी आई? 1.45%. फिर मोर और लेस एक बार इस्टेब्लिश्ड हो जाता है. फिर ये 200 डे से कितना? करीब 2%. गेटिंग माई पॉइंट. सो ये 200 डे से कितना है नीचे? विच इज क्लोज टू 2.61%. तो हम अगर बड़ी साइकिल्स देखते हैं यहाँ पे, तो 2.25 2.6 ऊपर, 2.6 नीचे. गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी नाउ. सो विल यू एबल टू मार्क साइकिल्स दिस वे नेक्स्ट टाइम? So this is what trading education is all about. This is what we study charts for the educational purpose. Now जो smaller cycles है, we don't pay much prominence, which means देखिए यहाँ से अगर आपको पता रहता ये 1.77 है. If you see it from here, this is how much? 1.40. So we don't consider this. कुछ लेंथ में चाहिए दिखने के लिए. So now अगर ये देखें, this is just whipsawing the 200 day moving average. Okay. So now all you have to do is mark this channel over here like this. अभी बैंक निफ्टी चैनल में ही है. So बैंक निफ्टी is not showing that much underperformance with respect to निफ्टी. Candles to candles अगर हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं there is some sense of resemblance net out there. So देखिए निफ्टी में आईटी का वेटेज है. If I go and check निफ्टी आईटी, आई थिंक 2 दिन से तो या काफी लास्ट लो तक आ गया आईटी. तो ये सब वेटेजेस जो है निफ्टी के वो उसको पुश कर रहे हैं. नाउ इफ आई सी रिलायंस विच इज अ हेवी वेट एज फार एज मार्केट इज कंसर्न, रिलायंस इंडस्ट्रीज. देखिए रिलायंस मार्केट को पकड़ के रखा है. अभी भी ये रेंज में, रेंज ना ऊपर तोड़ रहा है ना नीचे तोड़ रहा है. और एचडीएफसी बैंक एक बार हम देख लेते, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग हैवी वेट एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न. This is the culprit, but this culprit has gone to a substantial lower levels, which means that अगर आप look left to go right करो तो यहाँ से एक रैली हुई थी, more or less वहां तक आ गया. अभी now you only tell me how low from here. It may not rise, but कहीं ना कहीं एक बार it becomes oversold, which is a level from 2024 में. वहां तक तो आ गया एचडीएफसी बैंक. तो फ्रेंड्स बहुत बार क्या स्पाइक्स आ जाते हैं, हम अवेयर नहीं रहते, हम करंट मार्केट का जो भाव है उसमें पड़े रहते. डोंट डू दैट. बी नाउ अवेयर ऑफ इट दैट समथिंग, lots of things on the index fronts are oversold. So just keep this in mind. Okay. So on that note, let me open both the charts. Yeah, this is bank nifty. Okay. So बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं रोटेशन से इंडेक्स संभल गया है. And 200 day averages you are known. So one after this rise, we having this flag or a channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 days. मतलब आप समझो ना पूरे आपका महीना ही चला गया, 20 दिन. So 20 days only credit spread traders on the options expiry side made some money out there, or day traders trading for 50 100 points on nifty and bank nifty. Rest market was dead and dull. And will it continue? Looks like so. Reversal आने दीजिए. Okay.
So that's all from my side, friends, today. Thanks. Have a nice day. Before I end, देखिए, because of this market condition, मैंने जो कल का session रखा, which is from 4:30 to 5:30, will be our sessions, in which we'll learn how to measure volatility based on ATR daily and weekly and monthly, based on straddle price from options data, and based on VIX and square root of 252 and 52, which is yearly and weekly. So make sure you are there. ये तीन के अलावा, these are the dominant this dominant studies to find the range in the market for option strategies. So be there. If you have not registered, the link is there. Do register and make sure you forward to your friends or anybody who is interested to learn. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day, everybody. Just confirm it to me if you have all registered. So I'm not getting confirmation from anybody. जय हिंद इन्वेस्टमेंट नहीं, चार्ट आप स्पॉट का ही फॉलो करिए सर। स्पॉट का चार्ट फॉलो करके आप अपने बेस उसको रख सकते हैं फ्यूचर्स के ट्रेड के लिए, बट योर बेस हैज टू बी योर स्पॉट चार्ट्स. So the window of registration is open. Hi Chetan, how are you? Chetan is from Bangalore. He never misses a session. Right? What a wonderful person you all are. Yeah, we are now having regular. So let's make Trading Titan community bigger and stronger, friends. Try to spread the words. Whatever we are doing is with great commitment and for knowledge purpose only. So that's all from my side. Thanks. Have a nice day.